साउथ, हम जिस कंट्री के बारे में इतनी बातें करते हैं, इतने रिएक्शन हम लोग देते हैं उस कंट्री के बारे में, तो हमें उस कंट्री के बारे में ये भी तो जानना चाहिए कि वो क्यों इतना तेजी से ग्रो कर रहा है। क्या कहते हो आप? यार, ग्रो करने के अंदर पहले तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए आगे बढ़ने की। ठीक है, देखें, मैं पर्सनली लगन रखूंगा आगे बढ़ने की तो मैं अपनी फैमिली के लिए करूंगा, लेकिन जब वही लगन मेरी अपने देश के लिए होगी तो फिर वो एक जिसे कहते हैं इज्तिमाई तौर पे, यानी कि सब इकट्ठे होकर जब उस जद्दोजहद को करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो फिर उससे आपके कंट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आगे बढ़ने के लिए, दुनिया में उसका नाम ऊपर करने के लिए। चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, या दुनिया भर के जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट में एक्सपर्टीज़ जितनी ज़्यादा होती चली जाएंगी, उतनी लगन आपकी बढ़ेगी, तो उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ उन चीज़ों में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ऑब्वियसली बात है कि खाली यही नहीं कि ये कोई क्वेश्चन बनता भी नहीं है टाइटल का कि व्हाई इज इंडिया ग्रोइंग सो फास्ट। भाई हर कंट्री की यही कोशिश होती है कि मैं जो है तेज़ी से ग्रो करूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं ग्रो करूँगा तो मेरे कंट्री के जो लोग हैं वो खुश होंगे, उन तक जो रोज़गार सही मैसर होगा, और मतलब जॉब्स की अवेलेबिलिटी सही होगी, प्रोजेक्ट अच्छे दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं आप बेशुमार हैं, 200 तक तकरीबन मौजूद हैं, लेकिन आप देखेंगे उसके अंदर अगर गिने जाएं गिनती से तो 25-30 ही कंट्रीज ऐसे मिलते हैं कि जिनके जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं आगे? बढ़ इसलिए रहे हैं कि उनके लोगों में लगन थी, लोगों के अंदर लगन होती है। वैसे दुनिया का भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, जब लोगों में लगन नहीं होगी आगे बढ़ने की तो कंट्री किस तरह आगे बढ़ेगा? और ऑब्वियसली बात है कि वो अपने लोगों का सोच के भी कुछ प्रोजेक्ट्स लाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो है हालात बेहतर से बेहतर हो। बिल्कुल, तो यही सोच पे आई थिंक वो आज की वीडियो हो सकती है। और दोस्तों, आज हम शुरू करने लगे एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जिस कंट्री की है, उस कंट्री का नाम है भारत, इंडिया। व्हाई इज इंडिया गोइंग सो फास्ट? CNBC Explain इसको कर रहा है। हम इस चैनल को देखते हैं और इस पे हम ये चैनल का नाम क्या है? इसका नाम आई थिंक CNBC इंटरनेशनल ही है, क्योंकि अच्छा, जो चैनल है CNBC इंटरनेशनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब कुछ कर दें। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बिल्कुल स्टार्ट करें वीडियो को। As China's economic growth slows, people are looking for the next big driver of growth, and India seems to fit the bill. The IMF estimates that India will be the fastest growing major economy in the world this year, which is why companies like Walmart are paying top dollar for business deals in India. It's projected to expand by 7.4%, putting it ahead of China. So, what's driving India's growth? India has a population of 1.3 billion, making it the second most populous country in the world. It's on track to grow faster, even surpassing China's population by 2024. And the big population is also really young. India is on track to reap a handsome demographic dividend. This effect happens when a country's working age population is larger than the non-working age population. By 2050, India is expected to have a working population of more than 1 billion. While many Asian countries are aging, India's population has a median age of only 27.3 years, compared to China's 37.6 and Japan's 47.1. Since Prime Minister Narendra Modi came into power in 2014, his government has attracted record foreign direct investment. Modi has been credited for his strong reform agenda to improve India's business environment. The World Bank gave a nod to his efforts, improving India's ranking in its ease of doing business ranking from 130 to 100. But India's growth is like my cricket game, full of promise, but it hasn't quite delivered yet. India grew faster than China between 2014 and 2016, but lost its fastest growing major economy title last year. Within the country, domestic investment has fallen, as businesses have been hesitant to invest. India's exports have also dropped since Modi came into power, despite his Made in India campaign meant to fire up the country's manufacturing industry. Economists say that domestic developments are to blame.
In November 2016, the government's withdrawal of 500 and 1,000 rupee notes shocked the country. 86% of the country's currency could no longer be used in shops. Then, while businesses were trying to recover from that policy, the government implemented the Goods and Services Tax in July 2017. It's the biggest tax reform since India's independence, consolidating India's many taxes into a single structure. But it's also baffling businesses. For instance, should coconut oil be taxed as a cooking product or a hair product? Is a chocolate-coated biscuit a chocolate or a biscuit? The two policies on tax and demonetization hit consumption and investment hard, despite most economists agreeing that the goods and services tax will bring long-term benefits for India. This year, India is likely to keep its title as the world's fastest-growing major economy. But is fast enough? Former IMF chief economist and India's former central bank governor, Raghuram Rajan, has said that India needs to grow much faster. India has about 1 million people entering the labor force every month. So that's a big number that has to be absorbed, which means we need significantly more growth to get them good jobs. But India's growth this year faces serious challenges. Top ratings agencies like Moody's and Goldman Sachs have cut their growth projections for India. Why is that? One reason is rising oil prices. That could mean higher import costs and higher inflation. India is the world's third biggest oil consumer, after China and the United States. Because of low oil prices, which fell to about $40 per barrel in 2016, Modi's government could put taxes on petrol and diesel. India has become dependent on these taxes, which made up 17% of India's total revenue last year. The Indian rupee is also the worst performing currency in Asia this year, and it's expected to weaken further. This may look like just a humble pakora, but this Indian street snack has ignited a huge debate about jobs in India. This year, Modi was asked about the perception that he failed to create more jobs for young Indians. His response? Official statistics do not capture the true number of people working, such as pakora sellers. His comments caused outrage in India because there is a lot of anxiety for stable salaried jobs. More than 25 million people, a number greater than Australia's population, applied for less than 90,000 jobs on India's state-run railways. For the most junior role in the Mumbai police force, 200,000 people applied for 1,137 openings. Many multinational companies are excited about India, dreaming about selling fast food, smartphones, and fast fashion to a rapidly growing middle class. But right now, that middle class with income levels of similar populations in cities like Hong Kong and Singapore is extremely tiny, estimated to be just about 1% of India's population. The double whammy of a weaker currency and growing oil prices are going to hit India hard. Despite its challenges, India continues to grow quickly, but will it be fast enough to benefit its people? Hey everyone, it's Sin and thanks for watching. If you want to check out more CNBC videos, click here and here. As always, feel free to leave any suggestions for future videos in our comment section. Don't forget to subscribe and see you next time. वीडियो खत्म हो गई। लॉन्डिया शॉट तो मारा अच्छा क्रिकेट। अच्छा जी, अब आती है बारी डिस्कशन की इस वीडियो पे। हर चीज का आपको मालूम है कि डिस्कशन किस पर होता है। दुनिया आज किस चीज पर खड़ी है? आई थिंक इकोनॉमी पे खड़ी है। जिस कंट्री की इकोनॉमी मजबूत है उस कंट्री का सब कुछ ही मजबूत हो जाता है। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि उस कंट्री के कोई पास भी अटकता होगा। हर जाहिर है कि देखे ना, उसके पास हर चीज़ है। वो अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, इनकम जनरेट कर रहा है। दुनिया भर में लोग उसके बाहर जा रहे हो, ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हो। दुनिया भर में उस कंट्री के लोग सीईओ बने हुए हो। तो फिर आप बिग जायंट कंपनीज के लाइक गूगल, तो यूं समझ में आता है कि फिर वाई क्यों ना ये ऊपर जाए। हाँ, सही बात है। अब मतलब हमें रीजन समझ में आ गया ना कि भाई क्यों इतना तेजी से इंडिया जो है ग्रो कर रहा है। क्योंकि जाहिर बात है, उनकी जो लीडरशिप है वो ऐसे ऐसे इकदाम उठा रही है अपनी आवाम के लिए कि जिसकी वजह से जिसका जो आउटपुट है ना वो फास्ट ग्रोइंग है। देखिए, उन्होंने बुनियादी तौर पे काम किया। वहाँ की गवर्नमेंट ने जो काम किया, इस वीडियो से जो मैं समझाऊँ, उन्होंने बिल्कुल लो लेवल पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम किया।
ताकि हर आदमी इंगेज हो जाए उसके अंदर। जब इंगेज होगा, काम करेगा, वर्क बढ़ेगा, तो जाहिर है खुद ब खुद इकोनॉमी बढ़ती है, आगे ग्रोथ होती है, काम होते हैं, रिसोर्सेज बढ़ना शुरू होते हैं, दुनिया आपकी तरफ खींची चली आती है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक के एक कंट्री जो है जिसके मतलब लोअर लेवल पे जो पब्लिक है वो अगर खुश है तो आई थिंक उस कंट्री में सब कुछ ही सेट है। वैसे तो बड़े मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि 1.3 बिलियन वाली एक आबादी वाला एक कंट्री अपने आप को किस तरह से मैनेज करके चलता है। इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, सही बात है, बहुत मुश्किल है ये। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा इंडिया जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ख़ासतौर पे आजकल जो इसकी इकॉनमी पावर होगी वही दुनिया में रूल करेगा। हाँ, वही राज करेगा दुनिया पे economy। तो इसके साथ ही वीडियो को भी एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें भाई, कर दें। करते ही नहीं है यार ये लोग, तो हम लोग सैल्यूट मार के निकल जाते हैं, ये लोग उसके हमारा बाद ये सलूट भी देखते हैं आप लोग। वही तो, ये भी उसके बाद जो चले जाते हैं। भाई ऐसा ना करें, हमारा सैल्यूट तो देखें, लेकिन उसके बाद जो नीचे जाके रेड कलर का एक बटन जिसपे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा उसको प्रेस कर दें यार। हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर दो को भी आगे सब्सक्राइब करवा दें तो बड़ी आप लोगों से हमारी विनती है कि आप ये कर दें हमारे लिए। देखें, हम आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, आते हैं, टाइम निकालते हैं अपना, और आप लोगों को भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करें। तो अब सैल्यूट करने का टाइम आ गया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।